another campus tour. I am at UPS Dehradun, and if you are planning for your MBA and you want to know that whether this is a good option or not, watch this complete episode. Let's start. कहाँ से सर? सरदार जी कहाँ से? पानीपत हरियाणा। सो आमिन, अब 2 साल होने वाले हैं, क्या लगता है, मतलब इट्स वर्थ द मनी? बढ़िया ना, मेरे को पहाड़ों पे या फिर बीच पे जाना तो पहाड़ ठीक थे। पिताजी का बिजनेस है क्या? बिजनेस है बट करनी जॉब ही है। करनी जॉब है। Have you got place? Yes. Okay, where you got place? Torrent gas. And oil and gas specialization or? No, marketing. अच्छा, क्या पैकेज लगा है? 8 lakhs. 8 lakhs. Have you got place? प्लेस्ड कहाँ प्लेसमेंट हुआ है? महिंद्रा क्या पैकेज लगा है? 10 लाख। आपका प्लेसमेंट हुआ है? हाँ, मेरा हो गया ITBI में। आईडिया में क्या पैकेज लगा है आपका? 11 to 12 लगा है। आपका प्लेसमेंट हो गया? Yes, ma'am. कहाँ प्लेसमेंट हुआ है? Reliance GOB. क्या पैकेज लगा है आपका? पैकेज 9 का है। What's your name? अस्सित तुम्हें देख कैसा लग रहा है तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया होगा और 10 लाख के आसपास का प्लेसमेंट होगा, ऐसा है क्या? IDBI में है। हाँ, क्या 12 लाख का? देखो कितना अच्छा जजमेंट है यार, मुझे ज्योतिषी होना चाहिए। क्या प्रोफाइल है? अभी प्रोफाइल 3 स्ट्रीम्स में लिए उन्होंने, स्पेसिफाई करेंगे ट्रेनिंग के बाद। तो आपके हिसाब से एवरेज पैकेज क्या होगा कॉलेज? एवरेज पैकेज 7 to 8 का शायद इस साल होना चाहिए, इस साल बड़ा है थोड़ा सा। एवरेज यही है मैम, 7 to 8। 7 to 8। एवरेज प्लेसमेंट होगी 5 to 7 के बीच। The college gives the students a lot of freedom and curriculums which is good for the students' growth. And house clubs and committees, I mean, you वो अच्छी। आप किस क्लब में थे, you know? बस
बस कमेटी में थी, एक FIPI कमेटी थी उसमें थी, इन दोनों में। इंटर्नशिप आपकी कहाँ हुई? कितने मंथ की रहती है? पेड अनपेड? कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप मिली थी, पूरी सेल प्रॉपर। ठीक है, सब एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़, व्हाट डू यू फील अबाउट द कॉलेज? लोकेशन बहुत अच्छी है, घूमने के लिए चाय पीने हो तो मसूरी जा सकता है बंदा, बढ़िया। अच्छा, अगर तुम्हें मार्क्स देना पड़े प्लेसमेंट्स का, 10 में से कितने दोगे? 10 में से भाई 6। कॉलेज लाइफ, कॉलेज Crowd. अरे क्या बंदे हैं। 10. And what about this life at UPS? 11. Okay, fine. So what's your good name? दिग्विजय, क्या कर रहे हो आप यहाँ से? MBA in Strategy and Consulting, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? second. My name is Ishita and same as Digvijay, I'm doing MBA in Strategy and Consulting and I'm also in second year. Okay, fine. So have you got placed? Yes ma'am, I'm placed at Suzlon, क्या पैकेज आपको लगा? 12 lakhs. And what is your profile? The profile is into the strategy itself. I'll be working with the leadership and working on the strategies for the future. I am placed with KPMG and the package is 10+3 and also my role is of an associate consultant and I'll be working for the public and government service. And prior to this, do you have any experience? No, I don't have any experience. You are fresher. I'm a fresher. What about you? Ma'am, I have 4 years of work ex at a manufacturing firm itself, so that really helped me. Fine. सबसे पहला क्वेश्चन, if I talk about strategy and consulting, मुझे लगता है बहुत सारे कॉलेजेस में ये स्पेशलाइजेशन होती ही नहीं है, राइट? एंड स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट MBA, स्टूडेंट के लिए प्राइमरली ड्रीम जॉब होती है कंसल्टिंग, बिकॉज उनको लगता है मार्केटिंग में सेल्स करनी पड़ेगी, फाइनेंस में हो सकता है कोर रोल्स नहीं मिले, बट कंसल्टिंग वी हैव हर्ड दैट इट्स लाइक वर्क प्रोफाइल अच्छा है, यू गेट अ लॉट ऑफ. So, I mean, if I talk about this specific specialization, strategy and consulting, how it's all designed, what it's all about, and how it's different if we look at other colleges out there. Actually, while this course was being designed, there's a very important stakeholder that I would want to bring in over here, that is KPMG itself. So this entire program is actually designed in collaboration with KPMG. What that does is, it brings KPMG professionals who are out there, senior consultants, they come and take up certain subjects of ours. So that gives an exposure to us that is as close to industry as it is possible. Plus what they do is they give very real life examples. Theory वाला कोई भी example आपको. कैसे real life example? What kind of classes you have? For example, we have Consulting 101. This is one course out of many which is taken by KPMG itself. So in that we are given an exercise where we have to develop a proposal on a real world solution problem itself. तो हम लोगों को उन्होंने real world problem दिया about a real company that is out there, which they have done in the past, and then they evaluate how close we are to them. And then they actually teach us simultaneously also that this is how you build a proposal. And then much like what we've seen in a Shark Tank itself, we are out there, we have to give a proposal. It is rejected or accepted based on logic. So he talked about KPMG. Your program is also with KPMG. Any other thing you want to add to it? How it's different from other courses, other specializations? So you talked about consulting. So as you've said कि अगर आप finance में आपको ये काम करना पड़ेगा, marketing में तो आपको sales का काम करना पड़ेगा. हम लोग different कैसे? We are called as a corporate doctor. What is corporate doctor? जैसे आपका diagnosis करते हैं and then tell you आपकी body में ये diseases है. Similarly, जो भी organization में या business world में जो भी problems होती हैं, हमारा काम है उसको rectify करना और उसके लिए solution propose करना. This is actually what is consulting. एंड ऑल्सो ये कोर्स हमारे डिफरेंट कैसे है, क्योंकि अगर जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या कमिंग टू टीचर्स, सो दे हैव सम वेरी वाइब्रेंट टॉपिक्स गोइंग आउट देयर. सपोज वी हैव स्टडीड अ सब्जेक्ट दैट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग. सो वो एक फाइनेंशियल मॉडलिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो वहाँ पे जनरली वो लोग एक्सपर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, और जो वो यूज़ कर रहे हैं जिस तरीके से दे आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म हम लोग को प्रोवाइड किया. अच्छा, एक चीज़ बताओ कि बैच स्ट्रेंथ क्या है आपकी स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग? वी आर अप्रॉक्सीमेटली 53 स्टूडेंट्स. 53 students. And how many of them got placed? Ma'am, approximately 30 to 35 are placed as of now. 25 वाला बैच जो है. Yes. अभी तक एवरेज प्लेसमेंट इन रियल क्या होगा? So we are approximately placed up to like 50% of the class is already placed, and also the companies are coming and we are looking forward for. So average placement आपके हिसाब से क्या होगा? Average package would be around I think 12, 10 to 12. 10 to 12. Yeah. 10 to 12. Yes. Lowest package क्या होगा? Lowest package that has 7.5. 7.5. ठीक है. In general, I mean, if I talk about UPS, it's a tier 3 category college, tier 2 category college. So, जिन students का they're not able to make it all the IMs and all that, they have this question. एक तो investment बड़ा है,
it's in Dehradun. A lot of students prefer Pune, Mumbai, Bangalore. Third, expensive, right? So do you think, doing MBA from a tier 2, tier 3 college makes sense? A lot has to do with the course and the specific program that you're being enrolled in. So, like I mentioned, KPMG is over here also. The beautiful thing is that the professors that we have got for strategy, they are right out from the industry. So, a lot of them are professor of practice. PhDs also we have. The curriculum that we have is something that is next level, particularly in consulting itself. Because, like I stated earlier also, I would like to bring in one example. We had a capstone project where I was actually interacting with the KPMG head in the PNG sector. So that level of exposure, if I am able to get, provided I was not able to crack into top maybe IIM ABC. So to get that, it is completely a fair choice according to me to be here. Also, I mean, he's having 4+ years of experience. You're a fresher, right? So बहुत सारे students को ये भी लगता है MBA right after your graduation. So do you think, कोई disadvantage होता है if you don't have any work ex, when it comes to placements, when it comes to opportunities? So, not always. There might be some companies who are preferring work ex, like Accenture was preferring work ex. But then you have options. If you're a fresher, you can opt in for that. Suppose I got placed in KPMG. So my batchmates who were placed with me had a work ex, whereas I didn't have it. I was a fresher. So it's not like that. If you're a fresher, you don't have the opportunities. So you have the opportunities. It's just that you need to work on your domain knowledge and also more of the practical. One line, why MBA? To just find a better version of yourself, which is much more professional, much more polished. And one line would be to be corporate ready. Okay. Consulting, what companies look for in a candidate if they want to get into consulting? Let's say if they're not into strategy in consulting, what skill set, they specifically look for? So the most important skill set for a consultant, as we talked about the corporate doctor, is the problem solving, analyzing problem and structuring the problem. So आपको पता है कि प्रॉब्लम है, पर आप प्रॉब्लम्स को कैसे स्ट्रक्चराइज करते हो, कैसे उसको ब्रेक डाउन करते हो, दिस इज समथिंग अ कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन टॉक्ड अ लॉट व्हेन इट कम्स टू द कंसल्टिंग प्रोफेशन. Okay, thank you so much. बहुत सारे colleges में placements HR के उतने अच्छे नहीं होते, तो what do you want to say at UPS? How's HR at UPS? I think I've gotten the best of the best opportunities at UPS and ये सच बोल रहे हो या? सच में I have already secured my internship for summer. So I think I'm pretty Where you have got your internship? Bechtel. Bechtel, okay. Yeah. क्या stipend आपको मिल रहा है? 30,000. 30,000. Yeah. और कितने month की duration है? 2 months. 2 months. Yeah. अच्छा, मैं अगर in general बात करूँ, what do you think? HR का average placement क्या होगा college का? I think it is pretty low. Everybody knows that. It How is much? around, 8 to 9 lakhs. 8 to 9 lakhs. Yeah. Okay. If I talk about to give you ratings, अगर आप academics को 10 में से बात करें, कितना दोगे? I think academics are really good. We have pretty nice faculty as well as the 10 में से आप कितने marks दोगे? I think 10. If I talk about infrastructure, Infrastructure is also good. So I think 9.5. placements, Placements for, I think, as far as I'm concerned, it is good for me. So 9.5. and what about the college life and extracurricular? So it is very lively. Yeah. So 10 on 10. Okay, thank you. Hi, MBA? Yes. Hi. Hi. Interacting with your seniors, that how they got placed? So we were taking it on. Okay, you were seeing the bite. Yes. Now I'm here to take your bite. First year, second year? First year. First year, okay. तो अच्छा पहले मुझे बताओ सच कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान, आप कहाँ से? बिहार, त्रिपुरा. त्रिपुरा. अलग अलग जगह से यूपीएस आ गए. एक एक्सपेक्टेशन होगी जब कॉलेज देख रहे होंगे और मतलब 50 कॉल्स और बहुत सारी चीज़ों के बाद जब मेड इट कि चलो यूपीएस चलते. रियलिटी में क्या है? रियलिटी एज ऑफ आई थिंक कॉलेज इज गुड, फैकल्टीज आर आउटस्टैंडिंग, बट थोड़ा बहुत जो स्टूडेंट्स हैं आई थिंक उनको एफर्ट्स डालने की ज़्यादा ज़रूरत है. लाइक हम लोग भी हैं जैसे, तो कहीं ना कहीं लैग कर देते हैं बहुत सी चीज़ों में. तो आई थिंक that is where I think college is lagging behind. For me, reality is it is all about you. UPS provides quality education. I am an alumni actually. I did my BTech from here. So education is quality. Career service provides exceptional service. मार्केटिंग है क्या तुम्हारी? नहीं. And the only thing is that you have to work hard. The college gives you all the resources. It's all about you. So that is what I think. It all. अच्छा, एक और चीज़ है. If I talk about, मतलब जब मैं रात में आ रही थी तो ऐसा लग रहा था जंगलों के बीच से हम आ रहे हैं, राइट? So I mean, being a girl, if it's like quite, तो थोड़ा सा safety वाला भी, is that any issue here or it's like quite? See,
ऑपरेट अगर हम इतने जंगल वाले एरिया में लेट नाइट ट्रैवल करें इकोनॉमी है ना, सेफ्टी भी हमें खुद देखनी पड़ती है, तो इट्स बेटर कि आप दिन में ट्रैवल करें, क्यों जाना है ऐसे रोड पे जाके हो सके कोई डेंजर हो, तो इट्स बेटर कि अवॉइड दो। So you find all the facilities here at campus हर चीज़ के लिए? सब कुछ मिल जाएगा। Oil and gas student. Yes, MBA OG. ठीक है. So what's your good name? My name is Dev Tyagi. देव, अभी आप क्या कर रहे हो यहाँ से? मैं MBA Oil and Gas Management कर रहा हूँ, second year में। Okay, so have you got placed? Yes. Okay. कहाँ placement हुआ है, क्या पैकेज लगा है आपका? मेरी Torrent Gas में placement हुई है at a package of 6.75 LLP. Okay, fine. मेरा एक क्वेश्चन ये है that oil and gas I think I've already interacted with the students. तो अगर 2 साल को summarize करना पड़े, how UPS is, what do you want to say on this? Amazing journey I can say. बहुत ही डिफरेंट माहौल है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल है, मतलब आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक करा हुआ है, बीटेक के बाद MBA ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट करना मेरे लिए बहुत सही रहा, मेरा बहुत वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था यहाँ पे आने का। अच्छा, प्लेसमेंट्स पे क्या, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 18 लाख का इन्वेस्टमेंट, एंड तुम्हारा भी प्लेसमेंट लगा 7 लाख, तो ROI के टर्म्स में वेदर इज गुड और व्हाट? बात ये है कि MBA जब OG आप फर्स्ट ईयर कर मतलब MBA OG कर रहे हो, तो शुरुआत में आपको इतना अच्छा पैकेज भले ही ना मिले, बट हाँ जो हमारे सीनियर्स हैं जो टॉरेंट गैस में प्लेस हुए थे और भी अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस हुए हैं, उनका आगे 2-3 साल बाद करियर ग्रोथ दे हैव अपॉर्चुनिटीज, बाइट यू नो द पर्सन, नो प्रॉब्लम यार, खाते खाते भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शी इज एन इन्फ्लुएंसर। नहीं, यू कैन आल्सो कम इन द पिक्चर यार। क्या, हाँ क्या नाम है? सॉरी, आई एम सो सॉरी, यू नो आई डिस्टर्ब यू बाय लीटिंग। क्या कर रहे हो आप यहाँ से? MBA ओके, MBA स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग। अच्छा, सच सच बताना, इफ आई टॉक अबाउट प्लेसमेंट, 18 लाख का इन्वेस्टमेंट है, क्या प्लेसमेंट होगा? अभी तो पता चलेगा, अभी तो सेकंड सेम स्टार्ट हुआ है हमारा। बट सीनियर से तो बात, सीनियर से जितनी भी बात हुई है, मार्केटिंग में तो अच्छा प्लेसमेंट जा रहा है। आई थिंक बहुत ओके प्लेसमेंट है, जितनी वो बता रहे हैं इतनी है नहीं, बट ठीक है, जितना हमें दे रहे हैं उतना वापस अगर मिल जाए तो इट्स बेटर। ओके फाइन। अगर मैं बात करूँ तो UPS आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, बट आप दूसरे कैंपस की बात करो तो कैंपस ज़्यादा बड़ा है, तो हेयर यू फाइंड ऑल दी फैसिलिटीज इफ आई टॉक अबाउट स्कूल ऑफ बिजनेस? हाँ, exactly the same, just the infrastructure is bigger there, but the facilities and everything is same. And what about the academics, extracurricular clubs and committees? I mean, I think if I'm not wrong, they have this industry intervention program as well. So you want to say anything on that? Everything is great here, like the facility and the extracurricular activities, everything is great. So you are a part of any sort of clubs or committees? We are in GEMS. Okay, so क्या GEMS क्या करता है? GEMS is a marketing society. We are currently doing Udyom as well, and we have 2 events lined up in February and March as well. So do you think ये clubs में participate करने से होता क्या है? What advantage? We get a lot of connection here, normal. So we can connect to other people, and that is good for us only. That we will be able to put those connections and those things that we are doing on our resume. ठीक है, मेरा एक और क्वेश्चन ये है that if I talk about, मैं जब कल रात में यहाँ आई तो I think मुझे ऐसा लगा मैं कहीं जंगलों में खो गई हूँ, पता नहीं मैं पहुँच भी पाऊँगी नहीं पहुँच पाऊँगी। तो if I talk about the safety perspective, if I talk about the location, what do you feel? I think it's the plus point because I am from Delhi, so I can't see this like ये पूरा forest area and everything, but the safety is nice. So it's not that bad. ठीक है, because the police is there, they check like barricades लगे होते हैं वहाँ। So hi and welcome back to this another episode. This is me Arshi and I am at School of Business UPS Dehradun. So first of all, I am with a lot of students. कुछ के शक्लों से लग रहा है कि इनको ज़बरदस्ती बुला के खड़ा किया गया है that you have to come and give this bite. But trust me on this, I'm gonna bring the insights. So we'll start with the introduction. Please introduce yourself. So I'm Yamini Sharma and my course is MBA in Logistics and Supply Chain Management and I'm a final year student. Hi, my name is Prachi Dhadich. I am MBA Farm Management final year student. Hi, my name is Bhavya Shri and I'm pursuing MBA Logistics and Supply Chain Management here and I'm also a final year student. Hi, I am Malka Dhiman. I'm currently pursuing MBA in Aviation Management. Hello, my name is Mukul Sarawat. I am from MBA Aviation Management. I am also in final semester. मेरा दूसरा सवाल है, आपका प्लेसमेंट हुआ है? यस, नहीं हुआ है तो नहीं बोलना है. प्लेसमेंट कंपनी एंड द पैकेज, दैट इज समथिंग व्हाट यू हैव टू मेंशन. So yes, I'm placed with Accenture ATCI and the package is a little over 12.5.
I'm placed at EY Parthenon and the package is around 10 LPA. I'm placed with Whirlpool of India and my package is somewhere between 11 to 11.5. हम सब इतने सीरियस क्यों हो रखे हैं? I'm not yet placed. I am also yet not placed. Okay, fine. सबसे पहला question, you know, that is for you. If I talk about काफी diverse specialization के student हैं, we have aviation, we have supply chain, and we have power. So I think when it comes to power, बहुत कम students जानते हैं कि power management में career बनाया जा सकता है. So my first question is, what is power management all about? So, power management is all about the energy sector in India, and as you know that it is one of the sector which is booming a lot, and government is working on solarization, on green hydrogen. So all these things are coming up because India has a lot of climate goals to reach until 2030. So yes, the power management is all about What is the this. batch size you have in your class? Right now we had a batch of 29 students. So all of them got placed? So I guess 5 or 4 students are left. तो to be क्या placed. placement होगा? Average placement क्या होगा power management का? I guess the highest package was around 15 LPA. And what about the average? Average will be around 8 to 9 LPA. So I mean, power management में opportunities हैं if we look global perspective पे. हाँ, there are a lot of opportunities because India is undergoing energy transition and there are a lot of vacancies right now. Every company is kind of setting their net zero goals. So उसके अच्छा, लिए ये जो average चाहिए. placement बताया, ये सच बताया है या फिर you know ये मतलब सिर्फ बोलने के लिए बताया? नहीं, I guess it is around. It is around. ठीक है, fine. मेरा दूसरा क्वेश्चन है, I mean I just want कि आप जो भी पार्ट आंसर करना चाहो, we have logistic and supply chain management. पहले तो if I talk about logistic and supply chain, again it's a you know niche specialization first thing. Second thing thought process ये है कि you need experience if you want good packages. Companies थोड़ी सी कम आती हैं, ये एक thought process है. And career perspective पे लोगों को लगता है that you know पता नहीं है मुझे उतनी opportunities मिलेंगी या नहीं, and you have to start what logistic and supply chain management all about. So you can answer and whatever you feel like, you know, you can just bifurcate questions accordingly. Okay, so I can just say that logistics and supply chain is a very vast concept, niche based है, but they have different branches, they have different work specifications based on different JDs. And talking about opportunities, ये एक बहुत ही booming sector है इस समय. So anybody who can inculcate the skills that we study in this course particularly, we can actually find a place of for ourselves pretty soon, because it is a very booming sector, it's a very new sector. Definitely experience is definitely something that gives you an upper hand, but it's not that without आपका an batch size experience. कितने students का है? We are 88. 88. And Yes. how many have got placed? How many of them got placed? Most of them are placed, around 10 students, hardly 10 or 15 students are left. क्या average placement होगा logistics supply chain? So the range is starting from say 8 and it goes up to 15 if I'm not wrong. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.